Today, in the media conference with Lal Goyal, which is brought to you by V4 News, Karu News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan and Organ Donation India Foundation. Our endeavor is to enlighten you with the current topic, and today's topic is not only current but very, very relevant and alarming also. The topic is deteriorating emotional health of youth. Emotional health is about how we think and feel. It is about our sense of well-being, our ability to cope with life events, and how we acknowledge our own emotions as well as those of others. Emotional health is an important part of overall health. People who are emotionally healthy are in control of their thoughts, feelings, and behaviors. They are kept able to cope with life's challenges. They can keep problems in perspective and bounce back from setbacks. They feel good about themselves and have good relationships. Being emotionally healthy does not mean you are happy all the time. It means you are aware of your emotions. You can deal with them, whether they are positive or negative. Emotionally healthy people still feel stress, anger, and sadness, but they know how to manage their negative feelings. They can tell when a problem is more than they can handle on their own. They also know when to seek help from their doctor. Research shows that emotional health is a skill. There are steps you can take to improve your emotional health and be happier. This is as far as emotional health is concerned. But today's topic is a alarming topic because the deteriorating emotional health of youth. And to discuss this very, very important topic, we have very elite, knowledgeable, those who have full control about their own emotions and those who guide and counsels others also. Panelists are with us. And I would like to invite my first panelist guest. He is Dr. Rajiv Prakash. Dr. Rajiv Prakash is a very senior child specialist of Meerut. He is a pediatrician and consultant child specialist practicing for the last 38 years. He passed his MBBS and MD Pediatrics in 1982 from prestigious King George Medical College, Lucknow. He is president of Indian Academy of Pediatrics. His hobby is of studying Hindi literature since his school days. He is having vast collection of books. He is fond of listening Hindi film music. He also having hobby of singing. Welcome, Dr. Rajiv Prakash on our show. Dr. Rajiv Prakash, being a senior child specialist and pediatrician, you know today the youth is facing a very, very big challenge, and that is about the emotional health. And when you are seeing the patients on a very early age, from almost 0 to 12 years or 14 years, you know the problems because the emotional health also starts deteriorating even from the early age. We would like to know your views on deteriorating emotional health of youth. Dr. Rajiv Prakash, please. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank Mr. Lal Goyal that he has selected a very, very pertinent, a very, very timely topic because इमोशनल हेल्थ की तरफ लोगों का ध्यान जरा कम जाता है. तो देखिए, पहले सबसे पहले तो कि इमोशनल हेल्थ क्या है, हम उसकी तरफ अगर देखें तो इनिशियली हेल्थ का मतलब था कि ठीक है, लाइक एक बॉडी मशीन की तरह हमने बॉडी को ट्रीट किया मशीन की तरह कि ठीक है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, भाई उसका हार्ट है, उसका लंग्स है, उसका ब्रेन है, उसका किडनी है, उसका लिवर है, और ठीक है हमने उसके पैरामीटर्स देख लिए कि भाई ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, हार्ट रेट ठीक चल रहा है, पल्स ठीक चल रही है, and we treat like that. So that is one of the physical part of the health. Then next came the mental part of health. That is कि भाई मेंटल कैपेसिटी बच्चे की किसी भी पर्सन की कितनी है, क्या है, और फिर एक स्पिरिचुअल एंगल भी इसमें ऐड किया गया. बट लेटली जो ऐड किया गया है कि इमोशनल हेल्थ, वो भी एक ऐड किया गया है हेल्थ के अंदर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ. बिकॉज हम खुद ही देखते हैं कि भाई अगर इमोशनली हम स्टेबल हैं, ठीक है,
तो हमारे जो डिसीजंस होंगे लाइफ के वो बेटर होंगे। हम काम एंड क्वाइट में कोई भी काम, हम चाहे पेशेंट देखकर हम काम कर रहे हैं या हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो जब तक हम इमोशनली अपने को राइट पाथ के ऊपर नहीं है तो हम नहीं उसको हम देख सकते। बिकॉज वैसे भी इस समय हम वी आर लिविंग इन ए टाइम ऑफ पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस ये है कि वी आर हैविंग बिगर हाउसेस बाय स्मॉलर फैमिलीज, वी आर हैविंग वाइडर हाईवेज बट नैरोअर व्यू पॉइंट्स, we are having more and more possessions but we are enjoying less and less, we are having more and more medicine but enjoying lesser health. So in everywhere we are seeing that एक लाइफ ऑफ पैराडॉक्स हम लोगों का है कि प्लेंटी वी आर सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जैसे खासतौर से हमारे जो बच्चे हैं आजकल की फैमिलीज में, जो अपर क्लास फैमिलीज में, दे आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो उनका जो इमोशनल स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अब उसके अंदर ही क्या है कि भाई अगर हम देखें कि क्या पैरामीटर्स हैं जो हम ये कह रहे हैं कि इमोशनल हेल्थ जो है वो हमारी डाउन हुई है, डिस्टर्ब चल रही है। तो अगर आप देखें कि बच्चों में एंड एडोलेसेंट्स के अंदर एंड इवन इन एडल्ट्स एक प्रॉब्लम ऑफ एग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड, ये सब काफ़ी पिछले टाइम में काफ़ी बढ़ी हैं जितनी भी हैं। इंसिडेंस ऑफ ड्रग्स, इंसिडेंस ऑफ अल्कोहल, ये हमारे टीनेज ग्रुप के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर ये चीज़ बढ़ी है। इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स, ये हमारा काफ़ी पिछले टाइम में बढ़ा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारे पर्टिकुलरली यूथ की जो एक हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो बहुत सही पाथ पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्ब इस समय हो रही है। अगर हम इनके कारण में जाएं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि भाई जो बच्चे की एक इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ है या किसी भी यूथ की मेंटल हेल्थ है, वो इंटरप्रेंट लाइफ से शुरू हो जाती है। कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय से ये हेल्थ बनना शुरू हो जाती है। अगर सपोज मदर ही मेंटली अनस्टेबल है, इमोशनली अनस्टेबल है, तो जो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वॉम के अंदर वो उतनी सही नहीं होगी, वेदर फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। जो हम महाभारत के अंदर कहानी पढ़ा करते थे कि भाई मंजू माँ के पेट में था तो उसने जो चक्रव्यूह का वो सुना था, वो सब उसमें नॉलेज मिली थी, वो कुछ हद तक सही है। क्योंकि जो माँ के पेट में जो बच्चा है वो मदर के इमोशंस को परसीव करता है। अगर मदर डिस्टर्ब है तो जो मदर के हॉर्मोन्स हैं, जो डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं मदर को, वो थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड वो बच्चे को पास ऑन हो रहे हैं। तो दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो मेंटल फिजिकल ग्रोथ है वो इंटरप्रेंट लाइफ से शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो आजकल स्मॉलर फैमिलीज हैं, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, शायद पेरेंट्स के पास उतना टाइम बच्चों के लिए नहीं है जितना कि टाइम उनको एक बच्चों को पेरेंट्स को मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि भाई 6-8 महीने के बच्चों को क्रशिश के अंदर जो छोड़ दिया जाता है, मदर सुबह जाती है, जॉब पे जाती है, वो छोड़ जाती है, तो शाम तक वो आती है। तो डेफिनेटली देखिए जो एक पेड एम्प्लॉय है आपका, वो उतना इमोशनली एक सिक्योरिटी बच्चे को नहीं दे सकता जो कि मदर या एक फादर दे सकता है। ये कहीं मजबूरी है। दूसरे दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, रात को आए वो, अब थके हुए हैं, बच्चा उनका टाइम पे आ रहा है बट दे कांट गिव द टाइम क्योंकि उन्हें और भी सब काम करने हैं दिन भर के। फिर तीसरा एक एंगल है भाई, ये हमारा जो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो हमारा कहीं डिस्टर्ब हो रहा है हमारा, वो प्रैक्टिकली अब खत्म ही होता जा रहा है शहरों के अंदर। तो जो पहले के टाइम में जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, भाई दादा दादी थे, ना नानी थे, तो उनकी गोद में जो बच्चा एक सिक्योर महसूस करता था और जो वो एक नॉलेज और एक विजडम बच्चों को देते थे, आज कितने ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को महाभारत और रामायण की कहानी सुना रहे हैं। हम लोग अपने दादा दादी गोद में बड़े हुए, हम ये कहानी बचपन सुनते हुए हम लोग बड़े हुए, हमें गुट्टी में चीज पिलाई गई है।
तो वो आज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो क्रम्बलिंग है, खत्म हो रहा है। तो वो एक ज्वाइंट फैमिली एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन प्रोवाइड करती थी टुवर्ड्स इमोशनल एनरिचमेंट, टुवर्ड्स इमोशनल सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, एडोलेसेंट और द यूथ। कि भाई अगर मान ली सपोज यूथ है, जॉब पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब उसका नहीं भी लगा साल 2 साल के लिए, तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। उसको ऐसा नहीं था कि कहीं उसको रोटी के लिए मुसीबत आ रही है, तो वो ठीक है, वो भी एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर कुछ टाइम के लिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सिस्टम हमारा खत्म होता जा रहा है। दूसरे भाई आजकल जो प्रॉब्लमेटिक फैमिलीज हैं, आजकल रेट ऑफ डाइवोर्स आप देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है। तो उन डिस्टर्ब फैमिलीज के अंदर सबसे ज़्यादा जो उनका अगर इम्पैक्ट पड़ता है किसी के हेल्थ के ऊपर, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ के ऊपर, तो बच्चों के ऊपर पड़ता है। एड्रेस तो फिर समझ जाते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रोकन फैमिली है, कोई डिस्टर्ब फैमिली है, तो सबसे ज़्यादा उसका अगर असर पड़ेगा तो वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो वो एक एंगल है। तीसरा एक जो नेक्स्ट है कि भाई आप देखिए स्मॉलर फैमिली साइज होते जा रहे हैं, रिलेशंस हमारे खत्म होते जा रहे हैं। हम लोगों के टाइम में भी रिलेशन हुआ करते थे कि साहब वो कोई चाचा है, ताऊ है, बुआ है, मामा मामी है, ताई ताऊ ताई हैं। तो वो रिलेशन तो प्रैक्टिकली बच्चे भूलते ही जा रहे हैं। तो स्मॉल फैमिलीज के अंदर या एक या दो बच्चे अगर फैमिली के अंदर हैं, तो रिलेशन बन कहाँ पा रहे हैं? बच्चे जानते हैं रिलेशन को कि क्या रिलेशन हो। तो वो रिलेशन भी बहुत एक बड़ी एक इमोशनल एक सिक्योरिटी एक हमको दिया करते थे। आप अगर हम अपना बचपन याद करें, तो समर वेकेशन के अंदर हम लोग कहीं घूमने नहीं जाया करते थे, हम लोग हिल स्टेशन पर नहीं जाया करते थे। हम लोग छुट्टी होती, स्कूल बंद होती, हम लोग जो है वो अपने नाना नानी के यहाँ उनके जाते थे, और हफ्तों हफ्तों रह करके आते थे वहां पर। तो वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तीसरा एक आप देखिए कि जो स्कूल के अंदर बच्चे का एक मेजर टाइम स्कूल के अंदर स्पेंड व्यतीत होता है। तो जब से कमर्शलाइजेशन एक शुरू हुआ है स्कूल्स का, तो एक बच्चों में और टीचर के बीच में हम लोग के टाइम में एक फैमिली बॉन्डिंग हुआ करती थी कि टीचर जो है वो हमें डांटते भी थे, मारते भी थे, उसके बाद हमारी केयर भी करते थे। एक फादरली उनका मदरली एक उनका एटीट्यूड हम लोग की तरफ रहता था कि हम कोई भी अगर प्रॉब्लम है, परेशानी, उनसे हम शेयर करते थे, वो हमें गाइड करते थे। चाहे हमें फैमिली प्रॉब्लम, किसी तरह प्रॉब्लम हमें होती थी, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई की प्रॉब्लम हो, वैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, हम उनके पास जाते थे, वो हमें सुनते थे, टाइम देते थे, गाइड करते थे हमें वो। तो वो एक स्कूलों का वो खत्म हो गया। अब तो आप देखिए डांटने का और मारने का तो वो कंसेप्ट ही स्कूल में खत्म हो गया अब तो, कि भाई टीचर कांट थिंक ऑफ स्लैपिंग चाइल्ड। रोज आप हम लोग अखबार न्यूज में पढ़ते हैं कि साहब वहाँ टीचर पर केस हो गया, वहाँ टीचर पे केस हो गया, बच्चों क्यों मारा। कि पेरेंट्स सबसे पहले स्कूल में कंप्लेन करने आते हैं, आपने बच्चों मेरे बच्चों हाथ कैसे लगाया, हाउ डेयर यू टू चैट माई चाइल्ड। तो वो एक टीचर भी पढ़ने लगे उस चीज से नेचुरली कि भाई कौन अपने को इन्वॉल्व करना चाहेगा लीगल केसेस के अंदर। तो वो एक जो बॉन्डिंग हुआ करती थी टीचर्स के साथ, वो खत्म हुई। फिर एक हमारे जो बच्चों के सामने सब बड़ी यूथ के सामने बड़ी प्रॉब्लम है एक आइकन्स की। हमारे सामने एक बचपन में हम लोग थे, हम लोग बड़े बड़े हुए, तो एक आइकन्स हमारे सामने हुआ करते थे। हमारे पेरेंट्स हमारे आइकन्स थे, हमारे टीचर्स हमारे आइकन्स थे, हमारे सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हमारे आइकन्स थे। आज अगर आइकन्स हम देखें तो कौन है हमारे यूथ के सामने, कौन आइकन है? शाहरुख खान, सलमान खान, दे आर द आइकन। एंड एवरीबॉडी नोज द क्वालिटी ऑफ दोज आइकन्स, कि कितने इनके इन आइकन्स के पैर मिट्टी के हैं। तो एक आइकन्स की जो है वो एक कि किसको किसको बच्चा कॉपी करे, किसको इमुलेट करे। तो वो एक उसके नेचुरली बच्चे की इमोशनल हेल्थ के ऊपर, यूथ की इमोशनल हेल्थ के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। फिर एक प्रॉब्लम ये है कि भाई जो टीवी के अंदर जो कंटेंट्स, टीवी और सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन सब पे जो कंटेंट्स आ रहे हैं, आप उन कंटेंट्स की क्वालिटी आप देखें तो दे आर ऑल्सो सेपिंग द, दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ द यूथ। तो अब ये आप इसीलिए आप फिर आप देखिए जो उनके एड्स हैं, कमर्शियल एड्स हैं उनके, वो देखिए आप, उनके कंटेंट अगर आप देख लें। फिर जो सोशल मीडिया के अंदर बच्चों के स्मार्टफोन जब से आए हैं,
तो बच्चों के हाथ में वो चीजें वो बच्चे देख पा रहे हैं कि जो उनकी एज के हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उन्हें अप्रोप्रिएट। तो जो कंटेंट्स बच्चों को 15 16 से 18 साल की एज पे देखना चाहिए, 10 12 साल का बच्चा वो देख रहा है, तो नेचुरली वो एक उसको समझ तो पाता नहीं, वो जो सेक्सुअल कंटेंट्स हैं वो सब हैं, तो दैट ऑल्सो डिस्टर्बिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। उसको ना वो किसी से पूछ सकता, ना वो अपने अपने पीयर ग्रुप में वो डिस्कस कर लेते हैं वो उन चीज़ों को, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उन्हें, लेकिन देयर इज नोबडी टू गाइड देम ये चिल्ड्रन, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात एक और एक इमोशनल डिस्टर्बेंस के अंदर क्या आ रही है कि पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट है कि हम बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, तो उस गिल्ट को कंपनसेट करते हैं वो पैसे से। मैंने शुरू में कहा एक प्रॉब्लम प्लेंटी आजकल फैमिलीज में आ रही है कि बच्चों को डिमांड, इनके रिक्वायरमेंट नीड होने से पहले, डिमांड करने से पहले वो चीज़ उनके अवेलेबल है, तो इसलिए बच्चे उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते, बिकॉज पेरेंट्स वांट टू कंपनसेट द लैक ऑफ टाइम जो उसको बच्चों को देना चाहिए, दे वांट टू कंपनसेट फॉर द मनी, कि मैं तो वहाँ पर इतना खर्च कर दूँ कि ठीक है तुम जाओ, तुम फ्रेंड्स साथ जाकर एंजॉय करो, पार्टी करो जाकर। तो वो, लेकिन वो पेरेंट्स की जगह, जो पेरेंट्स की गाइडेंस होनी चाहिए, वो आजकल बच्चों को नहीं मिल पा रही है, आज के यूथ को वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग वेरी लोनली। फिर एक जो बच्चे अपने अंदर बंद होते जा रहे हैं, जब से ये आपका सोशल मीडिया आया है, टीवी के ऊपर, मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, तो बच्चे का अपना एक, उन्होंने अपने छात्रों में वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया, एंड दे आर entering themselves in that वर्चुअल वर्ल्ड। तो वो जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, तो जब उसके बाद उनका रियल वर्ल्ड से सामना होता है तो दे कांट एडजस्ट, उन्हें पता ही नहीं कि वो तो एक वर्चुअल दुनिया के अंदर जी रहे हैं, कि हर चीज़ जो है वो उन्हें एक क्लिक ऑफ बटन पर उनको अवेलेबल है, लेकिन जब सड़क पर आते हैं और तब उन्हें जो ठोकर लगती है, जब उन्हें पता लगता है कि बाहर की रियलिटीज कितनी हार्श है, तब वो फिर दे फील डिस्टर्ब। तो अब यही है कि भाई इनका सोल्यूशन क्या है, नाउ वी शुड फाइंड द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन तो यही है कि भाई मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही ये कहूँगा कि भाई बच्चों को पैसा उनके हाथ में मत दो, उनको टाइम दो, दे वांट क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम नहीं, ठीक है टाइम आपको शॉर्ट है, नहीं है मत दो आप, नहीं क्वालिटी टाइम दो। एटलीस्ट जब आप बच्चे से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, घर के अंदर आप डाइनिंग टेबल बैठ कर सब लोग खाना खा रहे हो, तो एटलीस्ट मोबाइल सब बंद कर दो। आजकल पैटर्न ये बन गया कि डाइनिंग टेबल को 6 लोग बैठे हुए हैं और 6 के 6 अपने बिजी हैं मोबाइल के अंदर, वो सारे कोई बिजी है, कोई एक दूसरे बात नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट क्वालिटी टाइम जो है वो अपने बच्चों को, आप अपनी फैमिली को दो, बच्चा वहीं से सीखेगा, यूथ वहीं से सीखेगा। जो फैमिली वैल्यूज हैं वो आप अपने बच्चों को दो। आज का स्टोरी ये है कि मनी तो बहुत मिल रहा है बच्चों को, लेकिन जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, वो बच्चों को नहीं मिल पा रहे, और वो संस्कार ना हमें वो शाहरुख खान सलमान खान देंगे, वो संस्कार हमें फैमिली से ही बच्चों को देने पड़ेंगे, फैमिली ही देगी। फिर दूसरे क्या है कि कोई बच्चों के ऊपर आजकल एक बहुत बड़ा प्रेशर है, प्रेशर टू परफॉर्म, कि हर एक का एक कंपेरिजन था, उसके बच्चा इंजीनियर बन गया, उसका डॉक्टर बन गया, तुम ये करो, तुम वो करो, कोचिंग में डालो, सुबह फिर मैं छोड़ी कोचिंग में डाल दिया उसको, तो प्रेशर टू परफॉर्म, वो प्रेशर बच्चों पर क्रिएट मत करो। हर बच्चे की एबिलिटी, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, उसकी टैलेंट अलग है। तो हर बच्चा जो है वो वही वाली बात है कि जैसे कि मछली पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती, हाथी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, बंदा पेड़ चढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे हर बच्चे के अंदर क्वालिटी डिफरेंट है, उन क्वालिटीज को पहचानो और एनकरेज करो। ऐसा नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बना वही सक्सेसफुल है, आगे बना वही सक्सेसफुल है। तो एक प्रेशर टू परफॉर्म जो बच्चों के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा है, एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमने बच्चों को रेट रेस में हमने झोंक दिया है कि वो कि भाई परफॉर्म करना है, कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें तुम्हें फर्स्ट सेकंड आना है, तुम्हें फलाना कंपटीशन में करना है, तो वो प्रेशर मत करो, एक उनको लाइफ जीने दो, उनको लाइफ सिंपल इतनी जो है वो सिंपल मैथमेटिकल 2 2 4 मत बनाना।
तो ये कुछ जो है वो चीज़ जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों की अपनी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उसको हम नहीं संभाल पाएंगे। तो डेफिनेटली आज के टाइम में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि भाई ड्रग्स का, अल्कोहल का एडिक्शंस ये सब बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उसके अंदर फैमिली हमारी जो है, फैमिली अपब्रिंगिंग, फैमिली नर्चरिंग, फैमिली वैल्यूज, वो जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की लाइफ को बनाए। Thank you very much, Dr. Rajiv Prakash, for giving in detail the condition of emotional health of youth. And Dr. Rajiv Prakash not only described what is emotional health, but also gave all the reasons, many of the reasons why the emotional health of youth is going down. And his main emphasis is the upbringing of a child. And according to Dr. Rajiv Prakash, earlier there used to be a joint family concept, and that's why the child used to get love and affection from many of the relations if the father is busy or the mother is busy. But now, because it's a nuclear family concept, no one is having time, neither father, the mother, the child is not getting that time, quality time from the parents, and that's why their emotional health is deteriorating. He also mentioned how earlier the teachers were taking care of the child or the student, which is now lacking because of the commercialization. And he has given many, many reasons. He also says that the pressure should not be put on the child, that he should be number one in the classes or whatnot. He also mentioned that earlier we used to have icons or those heroes whom we used to follow. But today our icons are only the film celebrities. There are no icons, national icons whom we are going to follow. The child is to follow. And that is the reason the emotional health is deteriorating. So he is giving many reasons, and he is also giving the solution that the family should take care of the child extensively by either spending time or giving quality time, etc. Thank you very much, Dr. Rajiv Prakash, for giving your such a detailed analysis about the deteriorating emotional health of youth. I'm sure those who are watching our show or those who are going to watch our show, whether they are youth or even they are seniors, they should understand that the condition is alarming. That's what Dr. Rajiv Prakash means. We have to take corrective steps right now, otherwise it will go beyond our reach. Thank you very much, Dr. Rajiv Prakash. I would like to invite my next panelist guest, and he is Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand is the... Bilal, may I interrupt? Let there not be two Rajiv in contemporary. Let two beautiful ladies come in between. I'm okay with that. Let them speak. So according to you, two beautiful ladies can come to one by one, but not two Rajivs. Okay, no problem. Thank you very much, Doctor. Yes, you have to yield. So you have already yielded. So I would like to invite the next panelist guest. Dr. Rajiv is having authority to say beautiful. For me, everyone is beautiful. So I will say next panelist guest, and she is Miss Anuradha Chandan. Miss Anuradha Chandan is the theatre and web series actress. She is the interior designer and artist. She has done her graduation BA from St. Xavier's, Mumbai, diploma in interior design from Rachna Sansad School of Interior Design, diploma in French from Alliance Francaise. She has done theatre under Pandit Satyadev Dubey. She has also done cameos in feature films, short films, ad films, and web series. She is having passion for art and painting. Welcome, Miss Anuradha Chandan, on our show. Miss Anuradha Chandan, you have heard what Dr. Rajiv Prakash has said. One point which he has repeated twice, I would like to emphasize on that, because you belongs to a fraternity which is quite close even to the film world. And he says that nowadays our icons are basically the film artists only, and are not ours, the youth. While in his time, or my time, or say Dr. Rajiv Anand's time, the icons were the heroes, or we were worshipping all those freedom fighters or others. So, and you are associated with films also, but you are also associated with art and theater, which is very, very important because in our earlier media conferences, many experts have mentioned
that the emotional health is also having a very, very direct relationship with the art and theater, etc. So we would like to know your views on deteriorating emotional health of youth. Miss Anuradha Chandan, please. Thank you so much for inviting me once again, Mr. Goel. And it's such a pleasure to always come back on your show. And it's such a pleasure to be sitting with a panel of such esteemed doctors and beautiful lady. And you, of course, Mr. Goel. And I'd like to tell you that what Dr. Prakash said was absolutely important. The entire growth and the development starts from conception. So it's like what you sow, so shall you reap, is what we have been led to believe right from the beginning. Unfortunately, I feel that it's not just hereditary, but 80% of the issues are environmental also. So we can't just blame the family, or we can't just blame the parents. It's the environment also. Today, the data or the statistics are really shocking. And one can see that there are almost 49.5% of adolescents who suffer from some emotional health issues or the other. So at least when we get down to certain brass tracks, we're talking of 1 out of every 5 youths today who are currently suffering from some kind of impairment, emotional impairment. And this is something that is very shocking. And this is something that has to be scary, and we better do something about it right now before it kind of gets really out of hand, as Dr. Prakash said. Now, I think most of the reasons for this emotional depreciation or depression or emotional deterioration is contributed by a lot of factors. You can't just pinpoint on one factor. Yes, I agree with what he said, that today we have nuclear families as against joint families. So the emotional bonds and the emotional links are not as vast and as strong as they used to be. But then today, look at the social media, look at the technology advancements. In the past, what was our recreation time? We went down to play, we met friends. Today, what do the youngsters do? They don't pick up the phone and talk. They just message. They just send, texts to their own parents. Nobody wants to hold a social conversation. So they are socially active, but at the same time, they are not bonding, say, over a proper conversation. Besides that, we have all these things like Instagram and Facebook, where everybody is bothered about the number of likes that you get on a picture that you put up and stuff like that, which was not the case in the past. So it's a make-believe world where you're trying to show the world that you are happy, that you are in a euphoric spasm. But the truth and reality is you're just bothered about showing it to the society. So emotionally, you may not be strong. Nobody is so high on self-esteem or on their basic ego that they can deal with it. They are looking for a constant validation. And that validation has become so important today. And validation, not only from your parents, but from the peers, from society, it has become very important. And that is the reason for some of these issues. They just want that constant validation. And not only that, what has happened is the way the life has gone in the last 2 years with Corona, where there has been a complete social isolation. That has also led to this emotional depreciation or this deterioration of your emotional health in the youth. Okay. A lot of us are still working online. So what is our physical interpersonal contact with people? It is down to a bare minimum. Today, you're scared even to go to somebody's house and sit across and have a cup of tea because you don't know how that person's going to accept it. So people of our generations have also started holding back. So how do you expect the youth to actually go around and socialize and, hold conversations and pick up the phone and talk to their grandparents or talk to their uncles and aunts or talk to their parents, etc.? So that is also what is leading to this emotional health issues. Besides that, there's a mass increase in competition to succeed and to be a topper. Today, when you come home and you tell your child and your child tells you
how many marks he or she got, the first question that the parent or the teacher asks is, how much did the topper in the class get? Why are you not happy with what your child has done? He's put in that effort. Are we appreciating that effort? No, we just want to know what were the highest marks. Do you accept your child, he or she, for what he or she is? No, you have set a benchmark, you set a goal, and you want that child to attain that goal. Listen, my neighbor's child got so much, so I need you to top that. Why is there this constant pressure from parents also? I am making so much money. Why am I making it? So that you can get your marks. I'm giving you the right tuitions. Are we loving the child for what he or she is? Do you go up to your child and say, listen, I love you, even if you are not the topper in the class? I love you, even if you do not look the best. No, why is it that we are not accepting and loving the youth for what they are? So obviously, it is a two-way traffic. Don't just blame the youth. Don't just blame the parents. I mean, or the teachers. It's everybody has to work as a close unit, as a close society, whereby it is a constant give and take. And only then can we have a good society. Only then can we uplift ourselves. So it's not just the youths, even parents today have issues. Look at what has happened to the complete economy post-COVID. I mean, all over the world, we are facing a downfall. We are facing recessions. We are facing loss of jobs. There's a lot of poverty around, lot of other health issues that have come in. And that is also stressing or making the youth anxious. So it is affecting them. And I think that is what it is. So family life, bonding, all these factors, everything is kind of leading to the stress, the anxiety. And not only that, there are a lot of negative elements and negative competitions, not only at home, but even in the environment today. And a lot of families have conflicts of interest, husband and wife not getting along. All these things also affect the child. Besides that, a lot of these kids, depending on what kind of emotional and economic background they come from, they suffer abuse. It may not be physical abuse, but it could be mental abuse. I mean, a simple story like you tell the child all his or her negative points, it is somewhere going to affect that child. You don't realize what you're doing it. You just say it in the heat of it as a parent or as a teacher. But the child may not be emotionally so strong to take it. So you cannot really, kind of just put a point on one thing and say, okay, this is the root cause of the whole situation. It's the whole environment. So all of us are equally responsible. And of course, today you have a loss of supportive relationships. The friends that you have are make-believe or very virtual or very fake. So you are going to have these kind of issues. What the children need today is right kind of mentors. We don't even have those kind of mentors. The population is increasing. Families have become dysfunctional. There's loneliness. I'm sorry, I'm sounding very negative when I say all this, but this is the truth and reality today. And I just wish we can smell the coffee and first understand what is happening everywhere. And can't just say, oh, today we don't have the right role models. No, they are there. We have to teach our children to hunt for those right role models. And nobody is telling you, okay, depend on the web series or depend on the social media or depend on the film stars. What they are doing is right. We have to teach our people, na, कि, okay, yaar, wo filmon mein hota hai. Ye hakikat nahi hai. We have to teach them to draw a line. So somewhere I think all of us have to take some responsibility and accept it. And most important, we have to teach the youth to develop their self-esteem, develop their self-image. That is important, I feel, in today's day and time. And I think there are a lot of things. And besides that, I think physical health, we have to encourage kids to go out, do physical activities, not just sit in front of the electronic media or play video games or just be
on socials, networking sites. We have to have family interactions. We have to go out together as a family, go out together, meet people in the same walks of life, different walks of life, meet, kind of get yourself to read a lot of matter. Okay, today nobody wants to read books, but yes, matter is available even on Google, even on other media. So we should encourage the kids to do that. And I think when they say they need help, we should give them help. I know a lot of parents who are not willing to accept that the children need help. Unfortunately, I'm sure Dr. Anand will agree with it, that a lot of parents do not accept that their children need help. And that is something that we have to change as a society. We've got to basically even encourage the parents to go out and seek help and help each one of us. So I think as a society, each one of us needs to bond together and help each other. Let our egos just go on the back burner and make it a better place to live. Thank you. Very well spoken. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Anuradha Chandan, for giving your views. Ms. Anuradha Chandan, although she agrees with what Dr. Rajiv Prakash has said, but she disagrees with few things. But she has made her point. She says she is blaming the technology. She says that because of the technology, the youth today is not interacting with each other. They are not going out. They are not meeting the friends. They are just even messaging their own parents or the families. So she says this is one of the reasons. She says that the pressure is too much. No one wants to know how much marks you have got, but they want to know what was the score of the marks of the topper. So all those things, according to Ms. Anuradha Chandan, is creating emotional health deterioration. She also says that earlier the joint family was there, but because of the environment, we have to see the environment. The time is changing. One has to accept. But she says that the parents should also understand that if the child requires the help, they should accept and they should take the help either from counselor or whomsoever, but they should not be of the denial mode always. And according to her, yes, situation is alarming. But the only thing is that we can try to inculcate such type of values in the child from the very beginning. She also says that about the icons. She says there are icons. We must find out those icons and tell the children that these are the icons, not only those film people, but whatsoever, according to Ms. Anuradha Chandan. Thank you very much, Ms. Anuradha Chandan, for giving your views. Now I would like to invite my next panelist guest, and she is Ms. Pooja Punjabi. Ms. Pooja Punjabi is a psychologist, hypnobirthing practitioner, and personal mentor. She is MSc Psychology and is trained in very different healing modalities. She is in private practice for more than 10 years. She is also consultant at Vasant College of Engineering for last 6 years. She is catering to all age groups to aid in a wholesome development of emotions, personality, relationships, career, professional and personal growth. Welcome, Ms. Pooja Punjabi on our show. Ms. Pooja Punjabi, you have heard what Dr. Rajiv Prakash as well as Ms. Anuradha Chandan has said, and they have given their views. Now you are catering to all age group as per your profile and aid in a wholesome development of emotions apart from personality, relationship, etc. And being a psychologist, definitely you are dealing such types of emotional health issues. Many of them are coming, those who are in early age or youth. We would like to know your views on deteriorating emotional health of youth. Ms. Pooja Punjabi, please. A very good morning to everyone, and thank you so much to all the elite panelists for sharing this platform with me. And Dr. Prakash and Ms. Anuradha have
beautifully stated what are the causes and what are the different approaches that we can also take in with the youth. So firstly, I would just like to start by saying that we all are doing our best. Okay. If it was not the best, we wouldn't be doing it. If it was something wrong, of course, we won't indulge in it. So we all are doing our best, yet there is a lot of scope for improvement, which is there, and there is space for working on ourselves and to create a better society for all of us. So having said that, uh, the recent research has shown that 7.3% of mental health problems is faced by youth today. And that is a very large number. And mental health issues, many of them, most of them come from imbalance of emotions. So if your emotions are not taken care of, we are heading towards a lot of mental health issues as well. Now, there are various causes, as they rightly said, exposure to media, but there are pros and cons of both of it. There is an exposure to media, but there is a lot of awareness out there in the youth today. They're already aware about things, emotions, situations, and events that are happening around them. They are also at the same time self-diagnosing. Now, the awareness is now turning into self-diagnosis. So they read about a lot of emotions. So when they put in, I'm feeling low, I don't feel like doing anything, and what pops up on Google will be depression. What pops up on Google will be clinical problems. And they sometimes walk in and come to us and say that I am in depression. And usually my question is, who diagnosed that for you? Was it a psychiatrist? Was it an expert? And they say, no, Google said. So now Google is becoming the expert, which Google is not claiming. Yet children are self-labeling with clinical problems. And they're attaching an association with those labels are creating more emotional chaos. Because obviously, if I put in physical symptoms, headaches, dizziness, fatigue, and many a times on the Google link will pop up cancer. Obviously, I'm going to go into panic if I read that. So in the same way, if I'm putting in tiredness, not motivated to do anything, and depression pops in, or bipolar disease pops in, or any other disorder which is catered to as clinical, they will obviously get into panic and anxiety that I'm having this problem, I'm having this problem. Just because we are facing certain emotional downfalls in that phase doesn't mean that I have the clinical problem. A problem becomes clinical only if it is consistent, if it's there for more than 6 months persistently. Then and only an expert can diagnose it for you. So please, I would like to request all the youth and the parents to stop self-diagnosing, because that will make things more easier. So let each one do our jobs. We have studied this and we've got trained in it as a psychiatrist or as a psychologist for a particular reason. So let's not get into that field of self-association. That's one of the things that I'm noticing with the youth. The second thing is we have all the information at the tip of our fingers now. So you just take your smartphone, put your fingerprint, and you type on Google and everything is available. So instant gratification. So if I want food, go to Zomato, order. If I want information, go to Google. I get all my research work information over there. So the lack of effort is becoming more and more. Now, parents are usually saying children are laid back, they're lazy, they procrastinate, they don't want to do. That's because you've given them this gadget called the phone or the iPad or the laptop, and it's available to them. So if things are easy for me, why would I want to make an effort? Why would I even want to get up and do something about it? So instant gratification has become a very, very common thing with the youth. They want everything in 2 minutes. So it's like Maggie noodles at all times. I'm hungry. I'm hungry for information. I want to look for relationships. Everything is out there. I want to make friends. Go on Facebook, Instagram, Tinder. There is so many things out there. So I am not putting in as many efforts as it's required because of all this that is available to me. Just because it's available doesn't mean that we are supposed to use it where it starts working against us. So when I'm talking about the gadgets or the social media or even your
internet for that matter, it's a double-edged sword. It works both ways. If it's beneficial, I agree, it's beneficial to a lot of extent, because during COVID, this was the medium which we used to connect to people. This was the medium that kept us balanced and sane during that time. But now it's working against us. Now we don't want to leave our comfort zone. So even if the world is getting back, we are asking to step out, but yet we are sticking to our comfort zone. Now this is my comfort zone, I don't touch it. It becomes very difficult. So now if the sword is pointed towards you and it's hurting you only. So we need to start understanding and encouraging, be it parents, be it students, be it teachers, all of us, as Ms. Anuradha rightly said, we have to work as a team. So it's not anybody's fault here. We are dealing with different circumstances. We have to adapt and move ahead with it. The next thing that is very important is, I'm sure if you all have heard of snowplow. So you all know what snowplowing. So when the countries where there's a lot of snowfall, there is a truck, and in front of the truck, there's a plowing mechanism attached to it, which clears the snow on the road and the cars can pass through there. What is happening lately with parenting is parents are becoming snowplow parents. So they're clearing the pavement for the child and then asking the child to move. They're removing all the obstacles for the child and saying, "Ab chalo." But earlier, what was happening was, with the youth or the earlier adults that are there, that they used to face their own problems. They had the resilience and the tolerance to face their own problems. But if the parents are going to clear the pavement for the children at all times, the child will never learn to do it on their own. The child will fail consistently, because life is not like an expressway at all times. It's like the Mumbai roads, where there are speed breakers, there are ditches, there are a lot of potholes, and life is going to be like this. So they, in their head, it's an expressway. Now that if a problem comes, I'm not equipped to deal with it. Even though I have the skill to deal with it, I have never learned to use that skill. And hence the problems begin. So to the parents and the teachers, as Dr. Prakash was mentioning, we are not allowed to scream at them. We are not allowed to, okay, hitting, I also agree, not raising a hand, but giving an instruction in a firm tone is allowed. That's okay. If the child is going sidelines, I, as a parent, have a right to bring my child to do something correct. Because if I don't do that, who will? If the teachers don't correct, who will? So a little bit of a balanced, firm hand on the child is important. So what usually I teach parents is, hold the hand firmly, not tightly, where you're suffocating the child, not loosely, where you let go completely, but a firm hold, a firm grip is important. And time to time, we as parents and teachers have to realize when to let go. Not snowplowing for them, not clearing the way from them. Because the more you clear, the more difficult it is for them as adults to deal with life situations. Because life will not be kind. Just because parents have been loving, life may not be kind at all times. We will have to face those challenges. And for that, we need to tap into our tolerance power and our resilience power. So extremely important. And the last 2 years, COVID has been a blessing in disguise. Why? Because a lot of people have gone within and understood themselves, have understood what we can do in the situation and what is adaptability. So we talk about IQ, we talk about, that is intelligence quotient, then we talk about social quotient, emotional quotient. There is something called as adversity quotient as well, which is extremely important to be taught to the youth today. Adversity quotient is when you are equipped, we all are equipped to deal with adversity. So I would like to just make this point clear with a small example. Okay, a small example, that is, there's a pot of boiling water. When you add a hard potato to the pot of boiling water, what happens is it turns soft. If you put an egg in it, which is soft, ideally, in the pot of boiling water, it becomes hard. And to that same pot of boiling water, when you add coffee, it merges,
it becomes fragrant, and it's good to taste. So when there is adversity, who are we being? Are we becoming soft like the potato? Are we becoming hard like the egg? Or we merge with the adversity, tap into our inner power, inner skills, and bring out the best that we can from the adversity for ourselves. This is what we are going to teach our children. Because if they learn this simple lesson in life, they will go a very long way. We have prepared them for adversity. So our job is to teach them constantly how to deal with emotions, how to deal with adversity when it happens. Next, I would also like to talk about there is this constant dissatisfaction also that I've noticed in the youth today. Okay, so they're constantly dissatisfied. So as we were talking about earlier, they want to be on this high of happiness at all times, which is not possible. We can be high, we know when. So we don't want to use those mediums to be on a high at all times. We are constantly looking, the youth wants to be happy at all times, which is not possible. We are humans. We will experience all emotions. We are born for that. So we'll experience sadness, we'll experience jealousy, we'll experience anxiety, we'll experience happiness, we'll experience joy, excitement, pleasure, all of these things. But constantly one emotion, not possible. And if you're constantly feeling one emotion, then you need to get a check about it, because something's off about it. If I'm constantly happy, something's not okay there. I'm trying to project something out to the world. So from inside, maybe I'm having a void. If I'm constantly angry, again, that becomes a problem. If I'm constantly anxious, again, that's a problem. So constant one emotion cannot stay with us. We are on a roller coaster ride of emotions at all times. There are dips, there are highs, there are lows, there's stability, there's all of it. We need to learn to balance and get our center with our emotions. So emotions come in full swing. They like emotions, I usually tell, are like those children who want our attention. Look at me right now. Take care of me right now. If you don't take care of me right now, I'm going to throw a big tantrum. So whenever an emotion comes, just sit with it for some time. Take care of it. Experience it. Experience it. Don't try to suppress or repress the emotion, because it's going to come back, and it's going to come back big. So sit with it, experience it, feel it, give it some time. Don't be in a rush to logicalize and pack it in a box and put it somewhere. No, don't do that. After a few hours or maybe days, depending on each person's personality, then logicalize it. Because if I've given the child that attention, it comes down, the tantrum comes down, and then I can logicalize. But if the child is in a tantrum, I cannot logicalize with that child. It's not possible. They will not listen, and they will throw a bigger tantrum. So in the same way, with an emotion, sit with it, experience it, take your time, process it, digest it, and then logicalize it. So that's very, very important. Few things that I want the youths to work on, which will help them in the long run. One thing about them is that's very good, which I'm realizing in the last few years, is the youth today themselves are approaching the experts, be a psychologist or a psychiatrist. So they're aware something's not okay with me and I need to go and talk to them. So I have teenagers walking in where the parents are confused. Why do they want to go? So one thing about the parents, don't take it personally. Just because your teenager is going to an expert or a mental health expert or somebody who's going to teach them about emotions, don't take it personally. It doesn't reflect on your parenting. Let's not take everything so personally. Just because if a child is going through certain emotions and can't handle, as a parent, it's not your fault. Everything can't be on you. So parents teach us values, yes, but the child is going out in the real world and learning a lot of things. As I said, the exposure is not even outside the house. Now it's inside our house. So they can get affected by a lot of other things. So don't get offended. Don't stop them from coming to an expert. If they have decided, let's respect their choices and be in touch with the expert to understand what the teenager is going through. Second thing, lower the self-judgment. Teenagers tend to, so as I'm saying, they swing between emotions. So either they're too hard on themselves or they're completely not indifferent towards emotions.
both the areas are going to cause problems. So stop being so judgmental about yourself, because half of the battle will be won there. If we are not hard on ourselves, we are going to learn how to accept. The more we are accepting of ourselves, the more we become okay with our emotions, with our behavior, with our personality. So this is one thing, if we start practicing, it's going to help a lot. Build up tolerance and patience. Now that can happen only with delayed gratification. So I'm not saying wait 10 years to satisfy your needs and desires, but just push it a little. So right now I'm feeling uncomfortable. As I said, sit with the emotion. Don't try to make it okay right then, right now. So if I want to eat something right now, and I just try and sometimes not going to Zomato and ordering, walk up to the kitchen, make an effort. So delayed gratification is going to teach me tolerance and patience. So that is extremely important. Be communicative. So sometimes, as I said, the youth tends to self-diagnose. Do not go into that habit. Rather, talk to an adult. Now, when I say if you are facing certain emotional problems, talking to your peers, yes, but that is only venting out. They're not going to be able to give you the solution because they're on the same boat like you. Some of them may be a little mature, but they will not be able to give you a full-blown guidance like an adult will be. So either if you're communicative with your parents and open to them, talk to them. If not, have a relative, have a expert come in. But communicating with an adult is important. Usually teens feel, I spoke to my friend, I'm feeling okay now. But that was only catharsis. You did what you said, what you had to say, and your friend heard you, and that doesn't resolve the problem. Just hearing it out. I need to process the information also. I need to become aware of it and implement it in action. So that is one thing I would like the teenagers to start doing. And lastly, empathy, compassion. Emotional quotient should be something that should be taught in schools. So I feel personally, that's my opinion, psychology should be a subject in school, not in college. By then, a lot of things have been messed up. As young children, it's important because psychology is not just about helping other people. It is firstly helping and knowing yourself. So till the child is out of school, if he knows themselves well, they are able to make better decisions. They are able to pave a path for themselves. So this particular thing, EQ, should be taught in school, should be openly discussed, where we are not mocking people's emotions, where we are not mocking the children. So if we work on all of this, we are creating a space for a better youth and for better adults and a better society for all of us. So yeah, today this is what I would like to share with you all. So thank you so much. Okay. Thank you very much, Ms. Pooja Punjabi, for giving again a very, very detailed analysis about the emotional health. And she has mentioned few things which are very, very important. I would just like to highlight. She says the technology, people feel the technology is harming, but sometimes it is also advantageful, because many times the technology, the Google says about if you are searching, if you are under depression or anything, you can very well find out, and then you can go and consult the doctor or the counselor. But only thing is that you should not try to self-diagnose yourself, but you should be aware about the thing. She also mentioned about the parents or the family, that they should not snowplow the things, which is very clearly, she says, that don't make it everything very easy for the children, so that they will feel that they are moving on an express highway. They must feel, she mentioned about the Mumbai roads, which I would not like to mention. Otherwise, the Shiv Sena, the earlier Shiv Sena or the present Shiv Sena, I don't know, they will feel offended. So it is better out of this thing. But she says that polite but firm, that is the mul mantra for dealing with the children. She says one has to be polite but very firm. And that is where you should not apply any physical slapping or anything, but you should be firm if any child is doing anything wrong. She also mentioned that the adversity quotient is very, very important, because if it is not there, then the child will not get the emotions. And whatsoever emotions are coming, the child should know how to deal with them.
She also mentioned about the communication, which is very important. The communication, the child should be encouraged to communicate with the seniors, or the parents or the elders, so that if there is any problem, it can be solved at that time. She mentioned about empathy, and she has made a very, very important point. She said the psychology should be made subject in schools, not to start in college only, which is a very, very new thing, which I am sure that if the psychologists or the psychiatrists and everyone will move it, then definitely the government will consider it. It's a very important thing, because the children should know the condition at that time only, instead of when they will reach to the college, then only they will come to know, and they will be getting the half-baked or uncooked knowledge, which is harmful for the child. So according to Miss Pooja Punjabi, there are lots of things can be done, but yes, if we will not do it, then there will be a problem. But these are very simple things. If anybody will do in the family, then the emotional health can be not going to be deteriorated as it is deteriorating nowadays. Thank you very much, Ms. Pooja Punjabi, for giving your views. And I'm sure today our viewers are getting so much enlightenment because of the views expressed by our experts. And I'm very happy today, because although Dr. Rajivanand mentioned about the beauty, I will say brains also, because the way both ladies have given the views, I'm sure the viewers are getting complete knowledge now what is the emotional health and how we can create the things in the atmosphere in the house, so that the child will not suffer, so youth will not face the problem of deteriorating emotional health. Thank you very much, Ms. Pooja Punjabi. Now I would like to invite our the guest who has asked us to come on the last, and he is Dr. Rajivanand. Dr. Rajivanand is a senior psychiatrist and marriage counselor. Dr. Rajivanand passed his MBBS in 1976 and did MD in psychiatry in 1980 from King's George Medical College, Lucknow. He opted to serve his country when it was very common to settle abroad for a brighter future. He has been serving society with his base in Mumbai. He has clients all over India as well as in many other countries. He was honored with Lifetime Achievement Award by AMA. He has conducted more than 3,000 workshops for different groups and companies with audience size of 10 to 800. His television program on various channels have been widely appreciated for his foresight and practical approach. He is learning in the field of mental and emotional well-being for 41 years. He was president of IMA for 2 times. He was interviewed in several talk shows in domestically and internationally. Welcome, Dr. Rajivanand on our show. Dr. Rajivanand, you have heard what Dr. Rajiv Prakash, what Ms. Anuradha Chandan, as well as what Ms. Pooja Punjabi has said. We would like to know now your views on this very important, very relevant, and very sensitive subject, deteriorating emotional health of youth. Dr. Rajivanand, please. Thank you, Mr. Lal. आपके इस बहुत सफल प्रोग्राम के जो व्यूअर्स हैं वो अलग अलग प्रांतों में हैं, तो उनकी भी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे। और राजीव प्रकाश भी खुश होंगे क्योंकि वो भी हिंदी भाषी हैं, तो इंग्लिश में हम लोग 1 घंटे से बात करें, थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे। अनु जो कि बॉम्बे बॉर्न ब्रॉट अप हैं और पूजा जो बॉम्बे बॉर्न ब्रॉट अप है, शायद उनको थोड़ा कष्ट होगा हिंदी के शब्द सुनने और समझने में। तो पहली बात तो ये कि लाल साहब का प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है और जिसके लिए हम सभी लोग आपके प्रति कृतज्ञ हैं। और एक और चीज जो हमने अच्छे लोगों से सुनी है आप लोगों से, कि जितना बोलना जरूरी होता है उससे ज्यादा सुनना जरूरी होता है। और आज हमने उसी को किताब करने की कोशिश की कि आज हम सुनेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम वो बोलते हैं जो हम समझते हैं कि हम जानते हैं। When we speak what we think we know. But when we opt not to speak and listen, then we learn many things which we never knew. मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आज तीनों ही मेरे से पहले वाले जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ अच्छी बातें बोली हैं, जो सुनकर हमें खुशी हुई, जो हमारी जानकारी को उसमें वृद्धि हुई, और उसके लिए हम उनके प्रति भी थैंकफुल हैं। पूजा पंजाबी ने कम्युनिकेशन की बात की, साइकोलॉजी की बात की। मैं वहीं से शुरू करूंगा कि इमोशनल हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो है कम्युनिकेशन, जो एक माँ और एक बच्चे के बीच में शुरू होता है,
या अभिभावक जो भी हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनके बीच में शुरू होता है। और कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है, जो कि कम जाना, कम सुना, कम बोला जाता है, कि शायद हम 80% सुने और 20% बोलें। जैसा कि हम सब लोगों के फॉर्मेटिव ईयर्स में हम सब लोगों को बताया गया था हमारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर की, ग्रैंड पेरेंट के द्वारा, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। और आजकल हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों से एज ए बैक करते हैं, मेरी सुनो, और कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास भी वही रिकॉर्ड है कि तुम मेरी सुनो। और दोनों तरफ एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, और दोनों में से कोई भी सुनना नहीं चाहता। ठीक है, हमारी जो तकलीफ या वेदना या जो हमारा बात होगी, जो सीनियर जनरेशन, उनकी एक अलग कहानी है। लेकिन जो यूथ है उसने सुनना बंद कर दिया। जब सुनना बंद कर दिया तो समझना बंद कर दिया, और जब सुनना बंद कर दिया तो आपने एक दूसरे को गहराई से उसकी, उन लोगों की आचरण को, उनकी मान्यताओं को, उनकी जीवन शैली को, उनके विचारों को समझना बंद कर दिया। क्योंकि अगर मैंने जैसा कहा कि हर यूथ को उसके पैदा होने के शुरू के कुछ सालों से जो कम्युनिकेशन उसके दिमाग में धीरे धीरे इम्प्रिंट किया जाता है, उसका पर्पज क्या है? क्योंकि वो कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, पहले माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दादा दादी के साथ, फिर पड़ोसियों के साथ, फिर समाज के और वर्गों के साथ कंफर्टेबल हो, फिर वो उनके साथ कम्युनिकेट करे, हर चीज उनके साथ डिस्कस करने की क्षमता डेवलप करे, फिर उनके साथ वो कनेक्ट हो, उनके साथ जुड़ना सीखे। तो ये हमारे जीवन के उन दिनों की फाउंडेशन थी कि हर बच्चे को धीरे धीरे सिखाया गया कि तुम कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, और ज्यादा लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, और ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करो, और ज्यादा लोगों के साथ सुनो, सीखो, कनेक्ट हो, ताकि तुम्हारे अपने चरित्र के या तुम्हारे मानसिक विकास में, तुम्हारे भावनात्मक विकास में समुचित इनपुट और लोगों से आ पाए। जैसा शुरू में डॉक्टर राजीव प्रकाश ने भी कहा, मैडम अनु ने भी कहा, कि अब नया सिस्टम क्या है, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस विषय पर हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग धीरे धीरे उस तरह के बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैंने इसको इस तरह कहा है कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान होगा कि मैं दूसरे पर सारी जिम्मेदारी डाल दूं कि बच्चे ऐसे निकल कर आ रहे हैं, और बच्चों के लिए बस आने कि वो हम पर जिम्मेदारी डाल दें कि हमारे पेरेंट्स ऐसे होते जा रहे हैं। लेकिन सभी का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रोल है। खाली जिम्मेदारी को पासिंग द बक से बात नहीं चलेगी, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे हम लोग। तो शायद पिछले कुछ दशकों में हम, और लाल साहब 60 में हैं, फॉर्चुनेटली अनु जी मेरे ख्याल से बहुत पीछे हैं। मैं उनको क्रेडिटेबली कहूंगा कि वो 3 दशक पीछे होनी चाहिए। पूजा तो बेशक उसमें है, राजीव प्रकाश हम और दशकों में, तो 60 के दशक में है। तो पिछले कुछ दशकों में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कि हम सब यूनिट अकेले हैं, हमने जुड़ना भूल गए हैं। जैसा अनु मैडम ने कहा था कि किसी फ्रेंड के घर जाके चाय पीना और चाय पीने का प्रपोजल करना, तो वो शायद वो फ्रेंड अपमानित महसूस करेगा, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे घर आके चाय पीने की सोचने की, तुमको पता नहीं है मैं कितनी बिजी हूँ। क्योंकि मैडम अनु को इस प्रोग्राम पर लाने के लिए मुझे उनके सेक्रेटरी से दो तीन महीने तक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ये कहीं पकड़ में आती है। उसके बाद ही मुझे 2 दिन पहले से कंफर्म करना पड़ता है कि आप फ्री है ना, क्योंकि इनके मॉडलिंग असाइनमेंट होते हैं, इनके वेब सीरीज के असाइनमेंट होते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है। फिर भी उसके बाद कहती है कि देखो अगर मैं शायद फ्री हूँ तो मैं आ जाऊंगा, तो मैं एक रात पहले तक अनिश्चित फिंगर क्रॉस करता हूँ कि आ जाएंगी। तो हम लोग, सब लोग धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि हम सब लोग दिल से चाहते नहीं है कि दूर हो, लेकिन होते जा रहे हैं। हम दिल से चाहते नहीं है कि हम दूर हो, मगर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जो व्यवहार हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में दिल का रोल सिकुड़ता जा रहा है और दिमाग का रोल बढ़ता जा रहा है। हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, जैसे डॉक्टर राजीव प्रकाश ने कहा कि रोड अच्छी हो गई, हाईवे अच्छे हो गए, घर अच्छे हो गए, लेकिन परिवार सिकुड़ता जा रहा है। तो हमारे जीवन में हर चीज मात्रा में तो बढ़ती जा रही है, और जहां भी सवाल मात्रा का है वहां सवाल दिमाग का है। तो हमारे दिमाग तो बढ़ते जा रहे हैं, हाई एजुकेशन, हाई नॉलेज, हाई सैलरी, एक्सपेंसिव गैजेट्स, लेकिन हम दिल से सिकुड़ते जा रहे हैं। और ये चीज बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे बच्चे सीसीटीवी की तरह हमें वॉच कर रहे हैं,
और हमारे व्यवहार का अनुकरण कर रहे हैं, उनके हिसाब से यही व्यवहार सामान्य है, उनके हिसाब से यही व्यवहार अनुकरणीय है, उनके हिसाब से यही व्यवहार हमारे समाज के बाकी लोग सराहनीय मानेंगे, तो वो वैसा ही करते जा रहे हैं। क्यों हम थोड़ा अपने अंदर अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। अनुज जी, आपको मेरी हिंदी सुनने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, कुछ फ्रेशर कोर्स हो जाएगा कि हम अपने अंदर भी अनुकरण करें कि हमारी जिंदगी में क्या कुछ लोग ऐसे हैं, हम वो अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जिनको हम फोन उठा के बात कर सकें और वो हमसे पूछे नहीं, हाँ बताओ किस लिए फोन किया। क्या हमारे जीवन में 10 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 3, क्या ऐसे हैं, 2 हैं जिनसे हम कभी भी बात कर सके, और बात शुरू कब हो और खत्म ना कब हो, घड़ी देखने की जरूरत नहीं हो। अगर हमारे बच्चे हमें ऐसा करते देखेंगे तो उनकी इमोशनल हेल्थ में एक बहुत सिग्निफिकेंट इनपुट होगा। क्या हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई बाउंड्री महसूस नहीं करते कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये रिच है, ये पुअर है, ये इतना महान ज्ञानी है, ये कम ज्ञानी है, वगैरह वगैरह, जितने भी समाज के द्वारा बनी हुई बाउंड्रीज होती है, उन बाउंड्री के प्रति, उन बाउंड्री को अलग करके हम कुछ लोगों से जुड़ सकते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अलग अलग विषयों पर बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, कंफर्ट, कनेक्टिविटी। क्या हम उसको अपने व्यवहार में खुद कर पा रहे हैं, ताकि उसका ही प्रभाव हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर या उनकी मानसिकता पर पड़ेगा। तो हकीकत यह है कि शायद हम में से काफी लोगों को इस विषय पर रुक कर स्वयं अंदर झांकने की जरूरत होगी कि हमें पहले खुद अपनी मदद करनी है। कहने को तो मुहावरे के तौर पर ये कहा ही जाता है कि बच्चा जो है वो समाज का ही दर्पण है, या बच्चे की साइकोलॉजी जो है वो एडल्ट की पर्सनैलिटी का ही रिफ्लेक्शन है, और काफी हद तक सही भी है। तो बच्चे के अपने भी बहुत सारे व्यक्तिगत इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ में डिटरमिन करते हैं कि किस दिशा में हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है। जैसा मैंने कहा, पिछले कुछ दशकों में शायद हमारे जीवन का मूल मंत्र एक रह गया है कि हमें पैसा कमाना है, बस पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करनी है, और पैसा कमाने के लिए 24 में से हमारे शायद 12 या 13 या 14 या कुछ लोगों के 15, या कुछ लोग दावा करते हैं कि वो बहुत बिजी हैं, शायद उनके 15 नहीं 16-17 भी घंटे सिर्फ पैसा कमाने में निकल जाते हैं। और बच्चे उसको देख रहे हैं कि आप 24 घंटे में आपकी मूल एक्टिविटी क्या है, आपका केंद्र क्या है, वो है आपका पैसा कमाना। अगर उनसे पूछा जाए रोक कर कि आप पैसा किस लिए कमा रहे हैं, और जो पैसा कमा रहे हैं उससे क्या पाएंगे, तो वो शायद किंग कर्तव्य में उड़ जाएंगे। ये शब्द तो हिंदी का जरूर आपको परेशान करेगा, पूजा को भी और अनु को भी। किंग कर्तव्य में उड़ जाएंगे, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं नॉन प्लस हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आपका ये सवाल भी तो का है, हमारा सवाल भी तो का नहीं है कि इस पैसे को कमा के हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि वो बच्चा जो आपके घर में ग्रो कर रहा है, अगर आपके पास उसके लिए समय नहीं है, उसके साथ वॉक करने जाने को, उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठने को, उसके साथ गार्डन में जाने को, उसके साथ हरियाली में जाने को, उसके साथ ग्रीनरी में जाने को, उसके साथ बीच पर जाने को, उसके साथ कुछ गेम खेलने को, तो आपका पैसा कमाना एक रोबो की तरह है। आप पैसा कमा रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, ईंट में दीवालों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप दूसरे शहर में प्रॉपर्टी खरीद के डाल रहे हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे आपका बच्चा है, उसकी ग्रोथ एक अलग दिशा में जा रही है। जो कल को वो ड्रग्स पी लेगा, गर्लफ्रेंड नंबर 1 2 3 4 5 की भी सीरीज पैदा करेगा, जैसे वेब सीरीज आती है एक के बाद एक के बाद एक। आजकल काफी लोगों की यूथ की जिंदगी में गर्लफ्रेंड की भी सीरीज आती है 1 2 3 4 5, और अगर किसी की लाइफ में कोई सीरीज नहीं है तो उसको लोग समझते हैं कुछ गड़बड़ है, एक नया मापदंड शुरू हो गया है। तो हम सब लोगों को रुक कर, जैसा कि हम लोग इस समय कर रहे हैं, कर्सी में सलाल, हम सब लोगों को रुक कर, और हम लोग खुद भी कर रहे हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम से जुड़े भी हुए हैं, चाहे वो इस समय वर्तमान समय में हो, ऑनलाइन पर हो, चाहे वो बाद में देखेंगे, हम सब लोगों को रुक कर इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना समुचित है? नहीं, हमें अपने अंदर झांकना है। और अगर हम अपने व्यवहार में, अपनी जीवन शैली में, अपनी विचार शैली में 1 2 3 4 5% भी परिवर्तन ला सकते हैं, तो संभव है कि उससे कई गुना बड़ा हमारे बच्चों की साइकोलॉजी में असर होगा। हमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि हमें सिगरेट पीने का शौक नहीं है,
हमें अल्कोहल का शौक नहीं है, हमें गालियां देने का शौक नहीं है, हमें समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी लोगों को, पुरुष हो स्त्री हो, वो किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का धंधा करते हो, हमें उनके प्रति कोई विचार जो हिटिंग बिलो द बेल्ट हो कहने का भी नहीं, सोचने का भी हक नहीं है। अगर हमने जीवन शैली शुरू से अपनाई है तो हमारे बच्चों ने भी अपनाई है। उनके मुंह से भी कभी वो गाली नहीं निकलती, वो कभी सिगरेट पीने का नहीं सोचते, वो कभी किसी भी लेकर के प्रति इतने अट्रैक्ट नहीं होते, वो किसी भी स्त्री को ये नहीं कहते कि वो ऐसी है वो ऐसी है, जैसा कि देश के काफी प्रांतों में लोग कहते हैं। तो हम उनके चरित्र में जो देख रहे हैं वो है जो हमने उनके अंदर दिमाग की सॉइल में बीज डाले हैं। अगर आज उनके अंदर वो फल निकल रहे हैं तो उसमें हमने बीज डाले हैं, और उसका भी श्रेय हम लेने के पात्र नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ने अपनी जीवन शैली से, अपने व्यक्तित्व से हमारे दिमाग में जो बीज डाले थे, जिसके प्रति हम कृतार्थ हैं, कृतज्ञ हैं, हम आज उसको एंजॉय कर रहे हैं कि हमारी मानसिकता वो है कि हमें पैसा कमाने की होड़ में नहीं है। जो भी हमें जानते हैं तीनों लोग जो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर राजीव प्रकाश, पूजा पंजाबी जी, भी कि हमें पैसा कमाने की होड़ में नहीं है। पैसा कमा के क्या करेंगे, क्या करेंगे? खाली उसको दिन भर नोट करेंगे। जो कमाने वाले हैं उनको नोट करने की फुर्सत नहीं होती। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बहुत सारे बिजनेसमैन को बेचारे को टाइम नहीं होता नोट करके रहेंगे, बस वो कमा के डालते चले जाते हैं और बाकी तो कैश करते हैं। कुछ लोग उनके जीते जी और बाकी लोग उनके जाने के बाद। तो अगर हम परिवार से जुड़े हैं और अगर हमने परिवार को अपनाया है और हमने फैमिली के हेड होने का दायित्व पाया है, बहुत होने के बाद शुद्ध हिंदी बोलने का मौका मिल रहा है। अगर हम परिवार से जुड़े हैं और हमने परिवार से जुड़े होने का एक गर्व महसूस किया है कि हम परिवार के हेड हैं, हम ब्रेड विनर हैं और हम मुख्य हैं या मुखिया हैं, शब्द हिंदी में बोला जाता है मुखिया हैं, तो उसका एक दायित्व है। उन दायित्वों को हमने कभी समझा नहीं, समझा कि सिवाय इसके कि हमने इतने अमाउंट 10, 15, 20, 30, 40, 50,000 घर में दे दिया घर चलाने के लिए, उसके अलावा हमारा कोई दायित्व नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है। और ये बात शुरू होगी अपने से, मेरे से, हर किसी व्यक्ति के अंदर बैठे हुए मेरे के केंद्र से कि मैं क्या कर सकता हूं। और हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में बहुत कुछ कर सकता है। मैं संक्षेप में आखिरी के 2-3 लाइन में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य, ये इमोशनल मैच्योरिटी, ये इमोशनल हेल्थ सिर्फ ये कि हम कितने लोगों से जुड़े हैं और अच्छी तरह स्वस्थ तरीके से जुड़े हैं, हम कितने लोगों को पोषण करते हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में, और हम कितने लोगों को मौका देते हैं कि वो भी हमें कुछ सिखाएं और हम भी उनसे कुछ सीखें। हम अपने परिवार से, अपने निजजनों से, प्रियजनों से, अपने वातावरण से, अपनी नेचर से, ब्रह्मांड के अलग अलग एलिमेंट से किस हद तक जुड़े हैं, उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा। खाली डिजिटल वर्ल्ड में नहीं होगा, खाली एलेक्सा में नहीं होगा, खाली मोबाइल में नहीं होगा। I'm sure the end of the program is all that's good enough for today, and we have been talking on diverse topic, and I'm open for taking this topic further on the children's emotional health and some other program in a bigger way. Back to you. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand, for again giving the detailed analysis about the emotional health. I would not like to go now for my analysis because already Dr. Rajiv Anand has given paucity of time. So now my first question goes to Dr. Rajiv Prakash. Dr. Rajiv Prakash, you mentioned about corporal punishment. कि पहले होता था कि लोग मारते थे और टीचर्स कंट्रोल रखते थे। आज कुछ भी जरा भी हाथ भी लग जाता है तो इमीडिएटली एजिटेशन होता है या केस फाइल हो जाता है। आपको लगता है कि क्या इस तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट से इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? समय का अभाव है तो सूक्ष्म रूप का जवाब आपसे अपेक्षित है। बिल्कुल, देखिए बच्चे की नर्चरिंग में, बच्चे की अपब्रिंगिंग के अंदर दोनों चीजों का रोल है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, बोथ। पनिशमेंट फिजिकल फॉर्म के अंदर भी थोड़ा बहुत पनिशमेंट जरूरी है। दैट शुड बी प्रोपोर्शनल, रिवार्ड एज वेल एज पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मिस्टेक और द परफॉर्मेंस डन बाय द चाइल्ड। कि जितना बड़ी गलती की है उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जितना बड़ा अच्छा काम किया उसी हिसाब से उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके मूड के ऊपर है, किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा है तो आपने बहुत बड़ी गलती भी ओवरलुक कर दी, नहीं कोई बात नहीं बेटा, चल जाएगा,
और किसी दिन आप ऑफिस से आ रहा, आपका मूड खराब है, बच्चे ने जरा सा कहीं कोई जी कुछ छोटी सी भी गलती कर दी और आपने एक कसर को झापड़ मारा, तो जी बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं कल गलत था या आज गलत हूँ। कल तो मेरी जी बहुत जी बड़ी गलती हुई, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, और आज इतनी जरा सी बात के ऊपर मुझे इतना पनिशमेंट दे दिया। तो कॉर्पोरेट पनिशमेंट में ऐसा मैं कोई थोड़े बहुत पनिशमेंट के अंदर कोई बुराई नहीं मानता। ओ वो एक ओके जी वो एक okay बच्चे sir को पढ़ाई के अंदर वो चीज़ होती thank you Dr. Rajiv Prakash for giving your views. Now my question goes to Miss Anuradha Chandan. You have mentioned about the technology, so my question to you is, do you think that technology is one of the main reason of the deteriorating emotional health today? If yes, shall we go back to the bullock cart age where we will be all moving in a bullock cart, no technology, nothing, or shall we do something which will keep our emotional health, especially for the youth, in control? Well, let's face it, change is constant and there is going to be an advancement in technology. We cannot go back to the Stone Ages. That is absolutely not possible. But we have to learn to live with anything in moderation. So, technology or social media, if it's handled with moderation, with certain specifications, and where you know where the person knows where to draw a line. So you cannot be addicted to technology, but yes, you use it for your benefits. So you should know where to draw a line. That is Okay. important. And that is, we have to teach not only ourselves, but the children. Everybody needs to know where to draw a line with technology. That's Okay, all thank that you I very can much, say. Miss Anuradha. Now my question goes to Miss Pooja Punjabi. Miss Pooja Punjabi, what stress management techniques would work best? If you can suggest one or two, time is short. So, Okay, so constantly discussing emotions is one of the important things. We should not hesitate from talking about our emotions. तो फिर वो गुस्सा हो या प्यार हो या सैडनेस हो, किसी भी इमोशन को डिस्कस करने में हमको सोचना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए. इवन वल्नरेबल इमोशंस, तो गुस्सा इज वेरी एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी. गुस्सा हम दिखा सकते हैं, पर अगर रो रहे हैं तो वो नहीं दिखा सकते, वो अकेले में करेंगे. या अगर हमें किसी चीज का बुरा लग रहा है तो वो हम अकेले में करेंगे. जिसने हर्ट किया उसको नहीं बताएंगे, हम पीछे जाके उसके बारे में बात करेंगे. सो one is your talking about your emotions. Second is assertiveness. We all as a youth have to learn, as adults also we all have to learn to assert and communicate about what we are feeling. पहले हमको पता होना चाहिए. So awareness is extremely important, and then awareness to the other person who's causing the emotional turmoil in me. That person also should be aware. उसका मतलब ये नहीं that they have to understand it and implement it. शायद वो नहीं कर पाए, but हमने अपना communicate किया, उससे ही काफी self confidence बढ़ता है. okay. Okay. Thank you very much, Ms. Pooja Punjabi. Now, my last question goes to Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand, do you think the adults are required counseling instead of blaming the youth about the emotional deteriorating health? Why not we counsel the adults? We should organize the counseling camps, or the adults should go to the counselors, take the counseling, so that the right parenting can be given to the children, and so this deteriorating emotional health can be controlled. Dr. Rajiv Anand, please. वर्तमान समय में इस शब्द को पूरी उसकी विवेचना में, पूरी उसकी विविधता में समझा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द बहुत गलत तरीके से समझा गया है. काउंसलिंग को मान लिया गया है वो लोग जिनका दिमाग विकृत है, जिनकी सोच विकृत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है. मुझे कहने में जरा सी भी तनिक भी हिचक नहीं है कि मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत है, और जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं वो सब मुझे मदद करते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग अंदाज में. जरूरी नहीं कि मुझे बताती हूँ, मैं उनसे कहता हूँ मेरी काउंसलिंग करिए, लेकिन मैं उनसे सीखता हूँ. तो काउंसलिंग जो है वो हर व्यक्ति को जरूरत है, अगर वो उस शब्द की उसके गूढ़ महत्व को समझ ले, बजाय उसके प्रचलित वर्ड को, कि हमें एक फ्रेंडली हेल्प चाहिए कोर्स करेक्शन के लिए, बिना जजमेंट के, बिना आलोचना के, जो हमें कुछ चीजें सही समय पर समझा सके, बजाय इसके कि हम गलत दिशा में सोचने में चले जाएं, गलत दिशा में कुछ काम करने लगे. तो काउंसलिंग की जरूरत तो हम सबको है. हाँ, हमारा अपना अहंकार या हमारे शरीर की उम्र का अहंकार या एहसास हमें उस काउंसलिंग से वंचित रखता है, ये हमारा दुर्भाग्य है.
Thank you very much, Dr. Rajivanan, for giving your views. So, viewers, we have seen today, instead of giving the blame to one or the other, it is better to have a balanced life in the family, even with yourself. Then only you can expect the children can also follow the same. Today, we always try to blame the youth, but we have to see whether we are also following the same thing. As our panelist says, if we are using more technology, we are sitting on a dining table and using the technology by smartphones or the phones for messaging here and there or talking, then how we can ask our children not to use that? Similarly, communication is very, very important. Communicate with your child. See to it that they will also communicate. They should be open so that they will not, their emotional health can be healthy or should not be deteriorating. So there are many things, and as the Dr. Rajivanan rightly said, it's a vast topic and we must go for that thing where we will take the children's or those who are toddlers, not the toddlers, but at least the children's of the age below 10 or 12 years, where this is also a problem is coming up. So it's all the things, but the thing is the family, me and you are responsible more, not to blame only the youth. Thank you very much. And today's program has been live telecasted by V4 News, Karu News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Sambasa Roka News, Bharat Post News, Gyan, as well as shown live on Facebook and YouTube. And tomorrow again, we are talking something about youth today. Tomorrow again, because tomorrow the world is celebrating World Youth Skills Day. So tomorrow our topic is World Youth Skill Days, and the media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. And our panelists are Professor Dr. Sudhir Saran. He's the former visiting professor IIM Lucknow and University of Texas at Dallas, USA. He's the founder of Dr. Sharan Consultancy, California, USA. Professor Dr. Naveen Gupta is the director of Hindustan Institute of Management and Computer Studies, and as well as Sharda Group of Institutions, Mathura, and Dr. Prema Sharma. She's a renowned memory girl from Noida. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. Thank you very much, Dr. Rajivanan. Thank you very much, Dr. Rajiv Prakash. Thank you very much, Ms. Anuradha Chandan, as well as thank you very much, Ms. Pooja Punjabi, for enlightening of all of our viewers about this very, very sensitive and very relevant and very important topic. And I'm sure today our viewers are also enlightened by listening all the expert views. Thank you, all the viewers.